Assalamu alaikum students of grade 5. Students, we have learned line graph in video number 8. In this video, we will learn one more way of data representation called pie chart. A pie graph or pie chart is a circular diagram to show comparison of value of different things. For this purpose, a circle is divided into parts to show different values. Each part is a fraction of the whole and is called a sector. The main use of a pie chart is to show comparison when items are presented on a pie chart. You can easily see which sector is the most share and which is the least share. Okay class, this is a pie chart. These are all sectors. And these sectors represent the different subjects with colors. Now let us learn how to read pie chart. Look at the pie chart. You can see in a pie chart data is represented like the slices or pies. So in a pie chart, a whole pie or a whole circle is divided into slices or parts according to the numbers of data. Item that you are present in it. Now we will solve question number 1, 2 from exercise 16.2. This pie chart is showing total 300 marks. Each sector shows 30 marks. 30 marks, 30 marks, 30 marks. When you add this all the slices or sector, this is the total number is 300. Now these 300 marks of different subjects: Urdu, Science, English, Maths and Social Studies. Each sector shows 30 marks. The subjects are shown with different colors. Urdu subjects shows one sector from whole 10 sectors. SST subjects represent one sector from whole 10 sectors. Math subjects represent 3 sectors from whole 10 sectors. English subjects represent 2 sectors from whole 10 sectors. Science subject represent 3 sectors from whole 10 sectors. If we want to know fraction of each subject, then divide it by the total marks of all subject with each subject. अगर आपको ये मालूम करना हो कि हर सब्जेक्ट का फ्रैक्शन क्या है, तो हम टोटल मार्क्स में से उस सब्जेक्ट के मार्क्स को सिंप्लीफाई करेंगे. नाउ एक्सरसाइज नंबर 6.2, पेज नंबर 148. The pie chart given below show the marks secured by Sameer in different subject. समीर ने डिफरेंट सब्जेक्ट में जो नंबर्स गेन किए वो आपको शो किए गए हैं डिफरेंट कलर से. ईच सेक्टर रिप्रेजेंट 30 मार्क्स और हर सेक्टर की 30 मार्क्स हैं. नाउ लुक क्वेश्चन नंबर 1. हाउ मैनी मार्क्स डिड समीर गेट इन मैथमेटिक्स. समीर ने मैथमेटिक्स में कितने नंबर गेन किए. और मैथमेटिक्स शोज 3 sectors and 3 sectors means 30 plus 30 plus 30, 90 marks. Sameer get 90 marks in mathematics. How many marks did he get in English? Now English has 2 factors, 30 plus 30, 60 marks. Sameer get 30 marks in English. In which subject he scored the highest marks? अब कौन सब्जेक्ट में इसके सबसे ज़्यादा या हाईएस्ट मार्क्स हैं? देन साइंस 30 plus 30 plus 90 marks and maths 30 plus 30 plus 30, 90 marks. Science and maths he got highest marks. In which subject did he get the lowest marks? अब सबसे कम मार्क्स इसने कौन सब्जेक्ट में गेन किए? Now SST 30 marks and Urdu 30 marks, one sector. Social Studies and Urdu he get lowest marks. What were his total marks obtained? टोटल मार्क्स जो
इसने गेन किए वो कितने हैं, तो आप देखिए, आप 30 + 30 + 30 + 30 + 30, आप सारे 30s को प्लस करें या 10 30s को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 300 मार्क्स द टोटल मार्क्स ऑफ 10 मार्क्स। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ साइंस एंड व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ साइंस। अब साइंस की फ्रैक्शन में मालूम करनी है, तो ही गॉट 90 मार्क्स अपॉन 300 मार्क्स। सिंप्लीफाई, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपने देखा कि इसने 310 मार्क्स फ्रैक्शन इन साइंस। 390 अपॉन 300, 0 कट किया, 3 3 = 9 एंड 3 10 = 30, तो 310 फ्रैक्शन ऑफ साइंस। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ इंग्लिश। अब इंग्लिश मार्क्स, now English marks, 2 sectors, 60 upon 300, 10 cut, 6 1 6, 6 5 30, 105 fraction of English. What is the fraction of Urdu? Urdu marks only 30 upon 300, 0 cut, 3 1 3 and 3 10 30, 1 upon 10 fraction of Urdu. Now look, question number 2. The following pie graph shows the games students play in a school. Each sectors represent 10 students. एक सेक्टर जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 10 स्टूडेंट्स से। दिस कलर रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स हु प्ले बैडमिंटन। This color represents students who play cricket. This color represents students who play hockey, and this color represents students who play football. Games students play the title, and cricket 4 factors sectors 4 sectors में आपको देखिए क्रिकेट है 10 + 10 + 10 + 10 40 students play cricket, and hockey 3 sectors 30, football 3 sectors 30, and badminton 2 sectors यानी कि 20 students. Now question number 1, how many students play cricket? अब कितने students क्रिकेट प्ले करते हैं? Now 4 sectors 1 2 3 4 40 students play cricket. How many students play football? And football has 3 sectors 10 + 10 + 30 students play football. How many students play hockey? Hockey 3 sectors 30 students play hockey. How many students play badminton? Badminton 2 sectors 20 students play badminton. What is the total number of students who play games? अब जो बच्चे टोटल स्टूडेंट्स जो बच्चे गेम्स प्ले कर रहे हैं, तो आपने जब 10 + 10 + सारे सेक्टर्स को आपने ऐड किया तो आपके बनेंगे 120, या 10 सेक्टर्स मल्टीप्लाई बाय 12 = 120. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. These are 12 sectors and each sector has 10 students. So 120 students who play games. What is the fraction of students who play cricket? अब कितने स्टूडेंट्स क्रिकेट प्ले कर रहे हैं, तो आप क्रिकेट 40 अपॉन 120 सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आएगा 1/3 प्ले क्रिकेट इन फ्रैक्शन फॉर्म. What is the fraction of students who play hockey? Now hockey 3 sectors 30 upon 120. जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर इज 1/4 फ्रैक्शन. What is the fraction of students who play badminton? Now badminton play 20 students, so 20 upon 120, the answer is 1/6. तो ये आपकी फ्रैक्शन आएगी 1/6. So these 2 questions, students do your copy. Exercise number 16.2, exercise
16.2, page number 148 and 149. Question number 1-2 in your geometry copy. This is your homework. Now students, thank you. Allah Hafiz.